हेलो एंड वेलकम। महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन पेपर 2 कॉमर्स का यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद 2024 क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 81, विच अमंग द बिलो इज एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ओके, एजेंसी के रिलेटेड है, एजेंट एंड प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन है। द एजेंट नीड टू हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, principal should have capacity to contract, consideration is a must for appointing an agent, or the principal should not be competent but the agent should be competent to contract. Option B is correct answer. The principal should have capacity to contract. List of capacity to contract है, principals should have capacity to contract. Option B is correct answer. Question number 82, quality of goods or fitness of goods for any particular purpose has no dash. Implied condition, implied warranty, express condition, express warranty. Option B is correct answer. Implied warranty means which is not specifically mentioned, और express का meaning क्या होता है, जो mention किया होगा written words में. So option B is correct answer. Next, when transfer of property in goods is to take place at future time or subject to some conditions thereafter to be fulfilled, the contract is called dash. Contract to sell, contract of future goods, contract of specific goods or agreement to sales. Option D is correct answer. Agreement to sell अभी तक वो contract बना नहीं है. Next, non-acceptance is a valid mode of dishonor for dash. Check, promissory note, bill of exchange, बैंक ड्राफ्ट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिल ऑफ एक्सचेंज. नॉन एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या होता है, नॉन पेमेंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हम क्या लिखते हैं, 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज दिस मच. तो नॉन एक्सेप्टेंस एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट, तो वो नॉन पेमेंट होगा जो डिसऑनर होता है इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट, which among the following is not a content of memorandum of association of a company. MOA, memorandum of association में कौन सा क्लोज नहीं है, नेम क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज और प्रिलिमिनरी क्लोज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रिलिमिनरी क्लोज नहीं होता है. तो कौन से क्लोजेस होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज एटसेट्रा. Next, which of the following is a horizontal agreement? Cartel, exclusive distribution, resale price maintenance or tie-in agreement. Cartel is a correct answer. It is agreement between the competitors to restrict competition and to fix prices. So option A is correct answer, cartel. It is illegal in India as per Competition Act 2002. Next, the advantages of which forms of business organization is incorporated in LLP Act 2008. क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन LLP एक्ट में रजिस्टर्ड कर सकते हैं. प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ऑल. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. We all know that partners liability is unlimited as per Partnership Act 1932, but पार्टनर्स साथ में मिलकर LLP एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड करके अपनी लाइबिलिटीज को लिमिटेड कर सकते हैं. तो एज पर LLP एक्ट पार्टनरशिप फॉर्म अगर रजिस्टर्ड करता है तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, एंड इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की भी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी इफ इट इज रजिस्टर्ड अंडर LLP एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. So partnership and private limited company, both forms of business organization can registered under LLP Act. Option C is correct answer. Next, which section of IT Act, Information Technology Act 2002 deals with the hacking of computer system and its penalties? Section 65, 66, 62, 67. So option B is correct answer. Penalties 66 में दिया है. Next, right to information is not about seeking answers and asking questions. This statement is very closely related to which section of the RTI Act 2005? Section 3, 2 clause H, 2 clause N or 2 clause J. Option D is correct answer.
Next, artistic work such as musical work, films, poems are included under which category of IPR? Patent, trademark, copyright, intangible rights. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. ये सारे कॉपीराइट्स के अंडर कवर होते हैं. We have completed 2024 question paper. Let's start with 2023 question papers. Question number 81. Unless there is dash, there can be no contract. Consensus ad item, common sale, goodwill or a profit. Option A is correct answer. लैटिन में कंसेंसस एट आइटम का मीनिंग होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स. अनलेस देयर इज मीटिंग ऑफ माइंड्स देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट. मीन्स ए wants to sell his car for 5 lakh rupees and B wants to purchase it for 5 lakh rupees. पर ए को व्हाइट कार सेल करना था और बी को लगा वो अपनी ब्लैक कार सेल करेगा. तो देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, question number 82. Maharashtra GST Act 2017 is published in Gazette on dash 15 June 2017. Correct answer is option A. महाराष्ट्र में फर्स्ट टाइम ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश हुआ था 15 जून 2017 को. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, what is the time limit to get information under ITR Act 2005? 15, 45, 60 or 30 days? Option D is correct answer. 30 days from the date of receiving request by PIO. So option D correct answer. Next, which section of the Competition Act 2002 deals with goods? Section 2 clause I, 2A, 2B, 2H. Option A is correct answer. Section 2 में सारी definitions दी है. Next, who can submit an application for registration in form GST registration 9? Non-resident taxable person, input service distributor, person deducting TDS, person collecting TCS. Option A is correct answer. GST registration number 9 ये फॉर्म नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन फिल करेगा. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म नंबर 1, पर्सन डिडक्टिंग TDS एंड कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स फॉर्म नंबर 7 फिल करेंगे. तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which one of the following is not an essential element of valid contract as per section 10 of Indian Contract Act 1872? Lawful consideration, lawful object, legal formality, cross offer. Option D is correct answer. Essential element में क्या क्या कवर होता है? Offer and acceptance, capacity to contract, free consent, lawful consideration, lawful object, legal formalities. ये सारे essentials to essential element of a valid contract. Next, the finder of goods has a right to dash over the goods for his expense. Care, lien, equality or bond. Correct answer is option B. He has right to lien. इसका मीनिंग क्या होता है? जब तक एक्सपेंसेस रीइंबर्स ना हो जाए तब तक वो गुड्स अपने पास रख सकता है. राइट टू रिटेन गुड्स until reimbursed. Next, which of the following is not an example of implied consent for discharge of contract? Novation, alteration, merger, change of law. Novation का मीनिंग होता है रिप्लेसिंग ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ न्यू वन. तो जब न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा. अल्टरेशन का मीनिंग होता है चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन. मर्जर when inferior rights merges into superior rights. Change of law discharges contract by operation of law. So option D is correct answer. Next, dash is defined under section 2 clause O of the Competition Act 2002. Price, goods, consumer, competition. Option A is correct answer. प्राइस का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज ओ में दिया है. गुड्स का डेफिनेशन अभी हमने किया 2 क्लोज आई. कंज्यूमर का डेफिनेशन 2 क्लोज एफ और कंपटीशन का डेफिनेशन किसी भी सेक्शन में स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया है. नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द लॉ ऑन आरटीआई इन इंडिया वाज महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, तमिलनाडु. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. तमिलनाडु में 1997 में आरटीआई इंट्रोड्यूस किया था. So we have completed 2023 question paper. Let's start with 2021 question paper. Next, in the words of dash, the law is the body of principles recognized and applied by the state, is the administration of justice. Salmond, Woodrow Wilson,
Sir William Anson और पैलक. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. वुडरो विल्सन यूएस प्रेसिडेंट थे. सर विलियम एंसन इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम किया था. पैलक ने कॉन्ट्रैक्ट एंड टोर्ट के ऊपर काम किया था. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन हिज असेंट टू लेजिस्लेशन ऑन सीजीएसटी ऑन विच डेट? 12th अप्रैल, 27th मार्च, 29th मार्च और 30th अप्रैल 2017. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. असेंट टू लेजिस्लेशन का मीनिंग होता है फॉर्मल अप्रूवल. जिस दिन बिल के ऊपर साइन करके एक्ट में कन्वर्ट होता है. प्रेसिडेंट बिल के ऊपर साइन करते हैं तो वो एक्ट बनता है और उसी दिन ऑफिशियल गैजेट में भी पब्लिश कर दिया था. तो 12th अप्रैल इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए. नेक्स्ट, सेक्शन 8 of RTI Act 2005 deals with dash exemption from disclosure of information, disposal of request, penalties, appeal. Correct answer is option A. Section 8 of RTI Act deals with the list of information which are exempted from disclosure. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. सेक्शन 8 में दिया है. डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में सेक्शन 7 में बताया है. पेनल्टी सेक्शन 20 में कवर किया है और अपील सेक्शन 19 में कवर किया है. नेक्स्ट, IPR protects the use of information and ideas that are of dash ethical value, monetary, social or commercial value. Option D is correct answer. IPR protects the use of information that are of commercial value and can be monetized. So option D is correct answer. Next, what is the validity of challan in form GST payment 06? 1 day, 5 days, 15 or forever? Option C is correct answer. GST चालान जनरेट होने के बाद विदिन 15 days उसका पेमेंट कर देना है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ विच एक्ट अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 years of age? इंडियन मेजोरिटी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875. Next, section 2 clause y of which act explains turnover as it includes value of sale of goods or services? Competition Act, Factories Act, Trade Union और महाराष्ट्र GST Act. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. कॉम्पिटिशन एक्ट में डिफाइन किया है टर्नओवर का मीनिंग. इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ सर्विसेज एंड एनी अदर कंसिडरेशन फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज. Next, if the threat is with regards to the goods or property of other party, it is not dash duress, fraud, mistake, illegal. Option A is correct answer. Duress involves threat to person's life and liberty. Option A is correct answer. Next, the cartel is defined under section dash of the Competition Act 2002. Section 2 clause C, 2F, 2H, 2I. Option A is correct answer. Cartel is a group of independent business who agree to fix prices of goods and services, limit production or supply, divide the market or reduce the competition. So cartel is illegal in India and it is defined under section 2C. 2F में कंज्यूमर का डेफिनेशन है, 2H में एंटरप्राइज का डेफिनेशन है और 2I में गुड्स का डेफिनेशन है. Next, which section of the RTI Act 2005 deals with the obligation of public authorities? Section 6, 7, 4 subsection 1 or 8? Option C is correct answer. Section 4 subsection 1 deals with the disclosure of information to general public. Section 6 deals with the procedure, how to file RTI application. Section 7 deals with the time limit of RTI request. Or Section 8 deals with exemption from disclosure of information. So here we have completed 2021 question paper. Let's start with 2020 question paper. Question number 81. The time for revocation of offer and acceptance is defined under section dash of the Indian Contract Act 1872. Section 5, 4, 3, 25. Option A is correct answer. Section 5 में timing of revocation of offer and acceptance के बारे में बताया है. So offer can be revoked at any time before its acceptance, and acceptance can be revoked at any time before the communication of acceptance reaches to offerer. Let's take an example of revocation of offer. If X offers to sell his car to Y, Y has not yet accepted the offer and X changes his mind and revokes the offer before Y accepts.
So it is a case of revocation of offer, because offer revokes before acceptance. Now let's take an example of revocation of acceptance. X offers to sell his car to Y. Y sends acceptance letter to X, but before acceptance letter reaches to X, Y sends another letter rejecting or revoking the acceptance. Since revocation letter reaches before acceptance letter, so Y's acceptance is nullified. So it is defined under section 5. Option A is correct answer. Next, what does I stands for in IGST? International, internal, integral or intra? Option C is correct answer. CGST, Central Goods and Service Tax. SGST, State Goods and Service Tax. UTGST, Union Territory GST, and IGST, Integrated Goods and Service Tax. Option C is correct answer. What is the fee for getting information under RTI Act 2005? 20, 50, 100 or 10? Option D is correct answer. 10 rupees है. Under section 6 subsection 1, that money can be payable by cash, demand draft or by electronic mode. Next, as per which section of the Patent Act, patent is not be granted in respect of invention relating to atomic energy? Section 4, 1, 2, 3. Option A is correct answer. Section 4 of the Indian Patent Act 1917 में लिखा है, patent cannot be granted if invention is related to atomic energy. पर align with this act, एटॉमिक एनर्जी का भी अलग से एक्ट है 1962, जिसमें बताया कि गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव राइट है एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड कोई भी इन्वेंशन होगा उसके ऊपर. फिर सेक्शन 1 ऑफ पेटेंट एक्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के ऊपर है. सेक्शन 2 डेफिनेशन के ऊपर है. और सेक्शन 3 किसके ऊपर है? लिस्ट ऑफ नॉन पेटेंटेबल आइटम्स के ऊपर है. ऑप्शन A, section 4 is correct answer. Next, which of the following forms are used for GST registration? GSTR1, GST APL1, REG1 और RED1. Option C is correct answer. Registration के लिए GST REG1 और GSTR1 किसके लिए? फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए. रिटर्न फाइल करने के लिए GSTR1 और रजिस्ट्रेशन के लिए GST-REG1. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. बाकी दोनों टाइप के कोई फॉर्म ही नहीं है. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग ग्रुप्स. ग्रुप 1, ग्रुप 2 आर गिवन. लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913 एक्सेप्टेंस के ऊपर है. ए. थॉमस वर्सेस थॉमस कंसिडरेशन के ऊपर है. बी. बर्नार्ड वर्सेस हेगिस कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है. सी. पीक वर्सेस गर्नी मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है. डी. सो ए बी सी डी इज करेक्ट सीक्वेंस. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग ग्रुप विथ रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. ग्रुप 1, ग्रुप 2 गिवन. टर्म्स और डेफिनेशन का सेक्शन दिया है. एक्सेस सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, तो 1 का ए. कंप्यूटर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज आई. बी. डेटा का डेफिनेशन दिया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज ओ. सी. और डिजिटल सिग्नेचर का जो डेफिनेशन है वो कवर करता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज पी में. तो फिर से ए बी सी डी इज करेक्ट सीक्वेंस. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, what is defined under chapter 11 from section 65 to 78 of the Information Technology Act 2000? Offenses, penalties, cyber appellate tribunal, electronic governance. Option A is correct answer. Chapter 11 of Information Technology Act 2000 में offenses के ऊपर है. सेट ने बी दिया है penalties, पर it is wrong answer.
ऑफेंसेस चैप्टर 11 में कवर होता है, पेनल्टीज चैप्टर 9 में कवर होता है, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल चैप्टर 10 में है और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस चैप्टर 3 में कवर होता है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. Offenses are covered under Chapter 11 of Information Technology Act 2000. Next, the Central Chief Information Commissioner is appointed by Dash. President, Vice President, Prime Minister, Home Minister. Option A is correct answer. As per Section 12 of the RTI Act 2005, President appoint करता है. Last question. Every LLP has to file an annual return duly authenticated with the registrar within how many days of closure of its financial year? 45, 120, 60 or 90. Option C is correct answer. Within 60 days. As per Rule 45.1 of LLP Rules 2009, Form 11 में annual return file होता है और it is to be submitted within 60 days from the closure of financial year. That is 31st March of every year. So option C is correct answer. Happy learning. Bye.